Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav, and here we have another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. And as we know that as you guys are doing well, and thank you so much for supporting and subscribe our channel. And जो CLAT की आपकी marathon session हुई थी, that was very important for the law aspirants, and that was a huge support and comments from your side, and thank you so much for this. And once again, as we know that newspaper is the best source for completing the current affairs. So why we need to do the current affairs? First, let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? If I'm audible and visible to everyone. Yeah. So in short, why the newspaper is important for every aspirant, because it gives you the information like what kind of things that you should keep an eye on that. And what exactly we discuss in news analysis? We discuss about national news, we discuss about international news, we discuss about economy, sports, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. This is very important for your exam. And here is a quote that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And we have taken initiative. Questions of the day, we'll ask you the 5 questions that will gives you the information about what kind of things that you should prepare for that, and how the questions are framed from the directly from the Hindu and Indian Express. And आज क्विक टिप्स में देखेंगे कि हाउ टू लर्न द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. हियर इज़ द वेरी फर्स्ट न्यूज़ आस्किंग अबाउट APEC. सो यहाँ पे जो बाइडन और जिनपिंग की मीटिंग हुई थी, दैट विल बी द बिगेस्ट शो ऑफ द मल्टीलैटरल समिट रीसेंट करंटली अंडरवे इन कैलिफोर्निया. द प्लेस का नाम आपको याद रखनी है. द बाइडन एंड जिनपिंग मीटिंग इज़ दैट वाज इन द कैलिफोर्निया, USA. So APEC हमारा क्या है? This is Asia Pacific Economic Corridor. That is Asia Pacific Economic Corridor. So APEC, which stands for Asia Pacific Economic Corridor, and Asia Pacific Economic Cooperations, basically should be cooperation. That is a grouping. A meeting is in San Francisco for the leaders week at the beginning of November 11, and it will conclude with the economic leaders retreat on Friday. So जो US के president हैं Joe Biden and China president and that is Jinping, that was scheduled to have a first in person meeting in a year of Wednesday. So ये जो है आपका grouping जो है APEC, इसके बारे में you should know about like what is Asia Pacific Economic Cooperation. कहीं किसी से प्लेस पे से आप कॉरिडोर भी देखोगे, बट मेक श्योर यहाँ पे इस आर्टिकल में मेंशन है कोऑपरेशन, तो हमें आप वो चीज़ को लर्न रखनी है. तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर और कोऑपरेशन, ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है. ये क्या है माय फ्रेंड्स? दैट इज़ अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम. इट्स अ रीजनल इकोनॉमिक फोरम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1989 विद the aim क्या था इनका? leverage the growing interdependence of the Asia Pacific and create greater prosperity for the people of the region through regional economic integration. That was the main aim the time of establishment. कितने members हैं इसके APEC के? wherever the any organization, कोई भी organization होती है, आपको ये चीज़ समझनी होगी कि उसमें कितने members होते हैं, right? So there are 21 members. There are 21 members of APEC that are called economies. rather than countries of member state, इसको बोलते हैं economies. So because trade and economic issues are the focus of the grouping, Taiwan and Hong Kong that are an APEC meeting, distinct entities, even though China says that are a part of China. So APEC जो economies है that are उसमें है आपका कौन कौन से country हैं? उसमें आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, उसमें आपका ब्रुनई and New Zealand and Hong Kong that is a part of China. उसमें फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइनीज़, सो रशिया, कनाडा एंड US, मैक्सिको, पेरू एंड चिली.
So that all are located geographically around the Pacific Ocean. What is the role of APEC? So my friends, that I told you that APEC एक regional economic forum है, and the role is that कि like the grouping champions free trade की बात करते हैं इसमें. So APEC main purpose is free trade, lowering the tariff rates को low करना, economic liberalization. So according to the US State Department, during the first 5 years of operation, so APEC established its core objective. 1991 में क्या हुआ था, एक यहाँ पे declaration हुई थी, that is known to be a CUET declaration. So that CUET declaration, that known to be a, that we can say, just a second. That we can say that declaration is known to be a, इस declaration क्या कहते हैं, CUET declaration. So 1991 में CUET declaration हुई थी. So APMC के जो members थे, so APMC member economy that proclaimed that the creation of liberalized free trade area around the Pacific Rim as the principal objective of the organization. तो इंडिया ने इस फॉर्मल रिक्वेस्ट की थी ज्वाइन करने के लिए APEC में इन द ईयर ऑफ 1991 में रिक्वेस्ट की थी ज्वाइन करने के लिए. 2016 में क्या हुआ, देन उस टाइम में यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो हमारी थी निर्मला सीतारमन, जो अभी आज की फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, वो उस टाइम के थे हमारे क्या थे, दैट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दैट ज्वाइन told Parliament that the request to join was based on India's geographical location, potential size of the economy and degree of trade interaction with the Asia Pacific. So that was the main crux of the entire news article. सबसे पहले आपको what are the important takeaways that you should know about. The word is APEC, which is Asia Pacific Economic Cooperation, right? And where is the meeting is organized, that is San Francisco, right? And when it was established in the year of 1989, right? And what was the main purpose to establish? To leverage the growing interdependence of Asia Pacific and that create greater prosperity for the people of the region. And how many members in the APEC? That is 21 members, right? Now here is the next article we're talking about, that is the state of economy. So okay, so state of economy, temper and euphoria. So in its semi-annual report, World Economic Outlook, that is Navigating Global Divergence, October 2023, the International Monetary Fund that has revised its projected GDP growth rate for India for 2023 and 2024 is 6.3%. That up from the earlier 6.1% for India policymakers. It is a vindications of their short-term economic management. The success is sweeter as the IMF revised downwards world growth GDP growth rate. So उसके बाद कि उसके क्या effects थे and what was the cause of concern. So surely output recovery is welcome, yet its effect on employment, that is equality and persistence of inflation of essential food items that are affecting the poor, the most remain cause of concern, as many critics have highlights. So globalization, as we know that since the Berlin collapse in 1989, उसके बाद की tectonic shift हुई in the world geopolitical order, that revealing India persistence vulnerable of the oil and food shocks. So what is the growing deficit with China? इस आर्टिकल में उन्होंने ये चीज़ मेंशन की है कि जो आपका देखो ये जो आर्टिकल होता है उसमें मिक्स्ड होते हैं सारे पैसेज एंड ऑल. So if you look it very carefully, however, the immediate concern in India is susceptibility to its soaring deficit with China. India economic fragility that has increased even as the next export, जिसे हम कहते हैं export minimum import to GDP ratio that has declined sharply, and India dependence on Chinese imports of manufacturers that seem structural and not easily corrected by changes in the relative prices. So Chinese imports of critical industrial products, China accounts for 15 to 16%,
15 to 16% of India's import and third of India trade deficit. The position is third of India's trade deficit. So from 2021 to 2012, in the year of from 2020 to 2011 and 2012 to 2021-2022, that gross fixed capital formation to GDP ratio at current prices that declined steadily from 34.3% to 28.9%. That is unprecedented fall in the post-independent India. So the widely reported rise in the centre's investment that apparently due to the merging of extra budgeting borrowing by central PSU. That is the public sector undertaking with the centre's own budget. Hence the projected boost in the public investment that seems illusory. The value of India HDI, which is called Human Development Index, that is released by UNDP, that moderated from 0.645% in the 2018 and it was in the 0.633 in the 2021. Here we have the next article, the price of persistent federal friction. इस article में क्या है? In the recent year of frequency and intensity of dispute between the union government and state that have increased, and the economic cost of such that is arising out of the homogenization of the social sector policies, उसके functions and regulatory institution and extended powers of central agencies are long lasting. So disputes between the center and states that regarding economic policy that have a long history in India, right? But however, in the recent years of the frequency and intensity of such disputes that have increased and assumed to the character of persistent frictions in the federal system. If you should know about the things that what is the federalism is. So federalism, that in short that we can say the division of powers. So division of powers, which means from the center to state, center and state. So division of powers, to there are some such kind of powers that are given to the state government as well. उसके लिए आपके पास DPSP है, which is known to be a directive principle of state policy, right? So we do not have complete federalism. We have quasi-federalism. What does the word mean is quasi-federalism, which means that we have most of the power that is tilting towards the central government. If you like, that is most of the power that have the central government have, so most of the power is inclined towards the central government. Like we have like some list which is in the state list, one is union list and one is concurrent list and the fourth one is residue list. As you know that the education is a part of a state subject, but central government can make a laws like new national education policy. So this shows that we have not complete federalism. Like farm agriculture is a part of a state subject, but central government can make a law. So in short, this includes the homogenization of social sector policies that functioning the regulatory institution. Recently there was a clash of LG of Delhi and the Chief Minister Arvind Kejriwal. So सेंटर ने लॉन्च किया था PM गति शक्ति, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म था ये टू इनकॉर्पोरेट स्कीम ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अचीव इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट. सो जब सेंटर दैट हैज़ अ अपर हैंड, इंडिया में हमारे अपर हैंड है बिकॉज जितने भी स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं दैट हैव टू प्रिपेयर एंड ऑपरेशन अ स्टेट मास्टर प्लान एंड विद द national master plan. So the very first thing that you should know that we do not have complete federalism. The second outcome has been a peculiar form of the fiscal competition between the center and the state. Some kind of law that has to make for the state only. कुछ laws central government अपने लिए बनाते हैं. And third important outcome is the inefficiency associated with the parallel policies. So federal aberrations that lead to either the center or the state duplicating the other policy. तो ये clashes का इनका main outcome था because the current context है, if you talk about the economic relation between the center and state is very different from the 1980s and 1990s, right? Okay, now here we have international grouping. इसमें आपका है next Quad Summit. ये क्या है my friends? Quad का मतलब होता है quadrilateral dialogue. Quadrilateral dialogue. So quadrilateral dialogue जो है और उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे
यहाँ पे सेकेंड है आपका 2+2 डायलॉग। सो क्वाड में कितने कंट्री हैं? क्वाड में आपके हैं यहाँ पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। So next Quad summit that is likely to be held in January. The date may be announced on 2+2 dialogue in Monday. That if India, Australia conclude CECA, ये आप देख लेंगे टॉप पे CECA क्या है यहाँ पे, that is called Comprehensive Economic Cooperation Agreement. So that is Comprehensive Economic Cooperation Agreement. So India and Australia are set to hold the second 2+2 minister dialogue on Monday, where the upcoming Quad summit that is expected to figure prominently, while the sides that will also take stock of the ongoing negotiations for a Comprehensive Economic Cooperation Agreement CECA, and the dialogues that come shortly after the India-US 2+2 dialogue last week, and that will be opportunity to discuss regional developments including the crisis in West Asia. सो इन शॉर्ट हम 2+2 और क्वाड के बारे में दैट वी हैव डिस्कस्ड कपल ऑफ टाइम्स। इसमें आपको ये चीज़ समझना होगा मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग FMFD के बारे में, और ये हम क्यों डिस्कस करें ये सारी चीज़ें, बिकॉज दैट वी टॉक अबाउट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, और ये एक बायलैटरल कोऑपरेशन है। इससे रिलेटेड आपने फर्स्ट आर्टिकल देखिए बैंकिंग स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे RBI होता है, RBI के साथ यहाँ पे कमर्शियल सेक्टर बैंक्स होते हैं, यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, यहाँ डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, यहाँ पेमेंट बैंक्स होते हैं। अभी आपने पेटीएम के ऊपर देखो RBI ने बहुत ज़्यादा फाइन लगाया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द जो पेटीएम के कस्टमर्स थे उनके पास KYC कंप्लीट नहीं थी। KYC क्या होता है माय फ्रेंड्स? ये होता है नो योर कस्टमर। सो कमर्शियल बैंक्स में आपका जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक्स होते हैं, जैसे आपका SBI हो गया, नेशनलाइज बैंक गया, PNB हो गई, आम प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स होते हैं, इसमें आपके इंडियन और फॉरेन बैंक्स होते हैं। फॉरेन बैंक्स कैसे हो गए? जैसे आपका HSBC है, हांगकांग शंघाई बैंक है, ये आपका फॉरेन बैंक्स है यहाँ पे। तो ये HSBC को आपको क्यों याद रखनी है? बिकॉज इस बैंक ने इंडिया में फर्स्ट टाइम ATM को लॉन्च किया था, HSBC ने, हांगकांग शंघाई बैंक ने। तो कमर्शियल बैंक्स में दो टाइप्स होते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक में आपका SBI, PNB, जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स होते हैं वो होते हैं, और नेशनलाइज बैंक होती है, ठीक है। इन दोनों कंट्रोल आपकी RBI कर दी, इन चारों को कंट्रोल RBI कर दिया। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, इसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स देती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देती है, जिसमें आपका एग्रीकल्चर, अर्बन हो गया, इसमें आपका इन शॉर्ट आपका नाबार्ड हो गया, जो गांव में किसानों को लोन देते हैं, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट बैंक्स में होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए एक्सिम बैंक है, इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स कहते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे आपका यहाँ पे नाबार्ड बैठा है, जिसको हम डेवलपमेंट बैंक्स कहते हैं। और यहाँ पे पेमेंट बैंक्स में आपका ऐसे आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो गया, पेटीएम हो गया, ये सारे आपके क्या हैं? पेमेंट बैंक्स होते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बैंक होते हैं आपका IFCI, ICICI, IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SFC, सिडबी हो गया आपका, सिडको हो गया, ये सारे आपके इंडस्ट्रियल बैंक्स होते हैं, मतलब किसी न किसी पर्पज से आपको ये लोन देते हैं, इंडस्ट्री के पर्पज से, राइट। तो ये हमारा बैंकिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। हमारा जो इंडिया का फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। और SBI आपका, इसमें आपको एक चीज़ फाइंड आउट करने की, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये SBI का ओल्ड नेम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, सो ओल्ड नेम है हमारा SBI का। न्यू फ्लेयर अप टू इन म्यांमार, यहाँ पे ओवर द पास्ट वीक दैट रेजिस्टेंट फोर्सेस हैव कैप्चर्ड 2 टाउन्स क्लोज टू इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसके बात की कि दैट इज डीप कंसर्न ओवर द ऑनगोइंग फाइटिंग द उस एरिया का नाम क्या है आपका? रिखडवाड़। ये जो आपका रिखडवाड़ area in the Myanmar China state that is close to the border with India, opposite in the Zaukathar in Mizoram। ये सारे प्लेसेस के नाम आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, कई बार वो पूछते हैं, जो आप इस मैप में देख सकते हो। ये म्यांमार का एरिया है, और ये अपना यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और असम का एरिया आपको इस मैप में दिख रहा होगा। So Myanmar that has been aflames ever since the military seized power in February 1st, 2021 को military coup लगा था वहाँ पे, and the day of the new parliament elected after the November 2020 elections that was to the convene ethnic armed organization EAO. So when and how did the current round of fighting begin? It began in October 27 with surprise attacks in Shan state on North Myanmar that along the border with China.
सो बाय द थ्री ब्रदरहुड अलायंस, जिसमें आपका है उसमें इन फ्रंट ऑफ EKU म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी MNDAA, उसमें तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी है और उसमें आर्किन आर्मी है. सो द ऑफेंसिव दैट वाज नेम्ड ऑपरेशन, उसका नाम था ऑपरेशन 1027. ऑपरेशन 1027 उसका नाम था, राइट. सो दैट इज द फाइट एंड ये हमारा ये चीज़ हुई. हाउ इज द करंट सिचुएशन दैट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटेस्ट एंड फाइटिंग of the last from 2 years? So despite a brutal crackdown against the EAO and PDF, that including carrying out airstrike on rebel gathering, right? So how much of theater to junta's position does Operation 1027 pose? इस ऑपरेशन का नाम आपको याद रखनी है बस. इंडिया के साथ क्या, इंडिया का जो बॉर्डर एरिया, उसमें बॉर्डर एरिया कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, उसके लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसके बारे बात की है. Criminal justice system that we had already discussed. Geopolitical about the Israel-Hamas war, और इसमें आपका जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो सऊदी इजराइल पीस प्लान है दैट डीरेल्ड, एंड ईरान सऊदी जो एंगेजमेंट है दैट इज डीपनिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट इज विटनेसिंग द लिमिट्स ऑफ अब्राहम अकॉर्ड, दैट इज वाइडनिंग स्कोप ऑफ द चाइना ब्रोकर रीजनल डिटेन नाइट. तो ये इसमें 97 ये ईरान और इजराइल और पैलेस्टाइन वॉर के ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं दैट कपल ऑफ टाइम्स. इसमें आपको मेन चीज IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में इसके बारे में भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, राइट. चलो नाउ वी टॉक अबाउट क्विक टिप्स के बारे में, और आपके सार कंट्री के बारे में है आज. आपका सार कंट्री को लर्न करने के लिए MBBS पे, इसका मतलब कुछ भी नहीं है बट आपको विद द हेल्प ऑफ नेमोनिक्स. M स्टैंड फॉर मालदीव्स, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, S फॉर श्रीलंका, P पाकिस्तान, A अफगानिस्तान, I इंडिया एंड N नेपाल. एंड सेकेंड वन देखते हैं साब. ये साब जो है बेसिकली स्टेट इंडिया शेयरिंग बाउंड्री विद भूटान. तो इसमें आपका S स्टैंड फॉर सिक्किम, अरुणाचल, असम एंड बंगाल. रिसेंट जो आपकी कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं म्यांमार के साथ, उसके लिए ये इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा. वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय हूम? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी. ये C is the right answer. So according to the International Energy Agency, India is expected to have the highest growth in energy demand over the next 3 decades. However, India's industrial sector that will emit 30% less CO2 by 2030, and passenger cars that will emit 25% less CO2 per kilometer driven. उसके बाद है a movie titled The Man Who Knew Infinity is based on biography of. और ये श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर है. श्रीनिवास रामानुजन कॉलेज, हिस्टोरिकल गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज इन तमिलनाडु, और इनके बारे में दी रही. एक श्रीनिवास रामानुजन वॉज अ इंडियन मैथमेटिशियन दैट इज नोन फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू द नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल एनालिसिस एंड दैट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के ऊपर में उन्होंने रिसर्च की थी. और इनके बर्थ एनिवर्सरी पे हम वी सेलिब्रेट National Mathematics Day, that is celebrated on the Srinivas Ramanujan birth anniversary, that is 22nd of December. Bureau of Indian Standards, BIS, is the national standards body that is working under the aegis of. BIS हॉलमार्क की जो ज्वेलरी होती है वहाँ भी आपने देखा होगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. सो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इज द इंडियाज नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज, और ये एक पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. एंड BIS that was established by the Bureau of Indian Standards Act 2016 में, which came into effect on October 12, 2017. और BIS जो होती है माय फ्रेंड्स, वो रिस्पॉन्सिबल होती है स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, हॉल मार्किंग, लेबोरेटरी सर्विसेज एंड ट्रेनिंग सर्विसेज के लिए.
Which substance is commonly used for the cloud seeding? Cloud seeding basically artificial rain का another name है cloud seeding. उसमें मैंने आपको इस आर्टिकल में बता रखी थी कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं. दैट इज प्रमोट टू फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल इन क्लाउड्स. वो सोडियम आपका सिल्वर आयोडाइड है. तो सिल्वर आयोडाइड एक कॉमन सब्सटेंस होती है दैट इज यूज इन क्लाउड सीडिंग. बेसिकली इसको हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं. जब इसको रिलीज करते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दैट प्रोवाइड अ सरफेस फॉर आइस क्रिस्टल्स टू फॉर्म अराउंड. एंड हियर इट इज द लास्ट क्वेश्चन. द प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द. देखो इस टाइप के जो एमसीक्यूज होते हैं माय फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व वेदर यू नो और डोंट नो, बट ट्राई टू एटलीस्ट सॉल्व द क्वेश्चंस बिकॉज you should develop such kind of temperament which is important to solving the MCQs, because you will see in your exam there would be a questions which would not be able to solve, but वो एक temperament होता है कि इस question को कैसे deal करना चाहिए हमें. that is very very important. और ये production gap report इसके right answer none of the above. so production gap report उसे authorize करती है SEI which is Stockholm Environment Institute और and UNEP. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions, please let me know in the comment section. And आपको ये session कैसे लगी please हमें ज़रूर बताएं. And we'll meet you tomorrow for the same time for the daily news analysis. Till then, bye bye and take care, and thank you so much for joining with us.